टीचर में जावा की क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो टीचर्स थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे, तो इट्स नॉट इनफ. सो नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट इवेंट हैंडलिंग. सो इंट्रोडक्शन अगर बात करें, इवेंट हैंडलिंग is of fundamental importance to programs with a graphical user interface. Okay, so that means the Java AWT event model works, and how to use the simplest GUI elements. Okay, so now we'll talk about तो फर्स्ट जो होगा इसमें आपका JDK होगा, जावा डेवलपमेंट किट. अगर इसके बेसिक फंक्शन की बात करें, बेसिक फंक्शंस की, तो सबसे पहले आएगा आपका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा क्रिएशन of user interface components such as buttons and labels. Okay, second part की रहे तो that means support for giving behavior to the components by GUI events. Like that अगर हम बात करें, बटन क्लिक, mouse click, okay, these are the events. Okay, action, support, key event, mouse move, these are the events. And now support for grouping and arranging the components on the screen. Okay, and next point is support for accessing window manager, facilities like that, input, focus, reading JPEG images and other image, files and printing. Okay, these are the 4 point we are using over here. Okay. Okay, so now we talk about on screen buttons. Okay, menus, frames or other elements the user will touch next. So this is known as event driven programming. Okay, so now if you talk about window main loop, so that means event driven programming, and one flow of control beginning to end. The runtime that means system
runtime systems sits in a window main loop. Simply either we can talk simply waiting for user input. Okay, so it is waiting for user input. So now this is known as when turn it into an event and passes it on to a HND handler. Okay, so that means this is known as callback. Okay, so callback routine, because the Windows system callback to it when the event happen, यानी कि जब event happen होगा तो ही Windows system callback होगा. So now we'll talk about basics of event handling. तो बेसिक्स क्या है इवेंट हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारे, तो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इवेंट सोर्सेस, जैसे कि आपने किया बटन्स, मेन्यूज, चॉइसेस. ओके, सेकंड बात करें तो implement an interface to provide the event handler that responds response to event. Okay, and next point is that register this event handler with event source, and now add the event source to the container like applet, frame and panel, etc. So these are the points we are using basic event handling, 5-point declare, implement and like that. So first we talk about a few things so we can understand event delegation model या फिर event delegation model. So event delegation model में क्या होता है कि सबसे पहले स्टिमुलेट्स होते हैं, X event source होता है, वो X event listener के पास जाता है, X इवेंट लिस्नर Y इवेंट लिस्नर के पास जाता है और सिमुलेटर्स होता है. तो सोर्स और सोर्स के बीच में इवेंट्स परफॉर्मेंस होता है. तो अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले तो मैं बात करता हूं एन इवेंट सोर्स प्रोड्यूसेस इवेंट्स एंड dispatches them to all registered event listeners. तो जो आपके रजिस्टर्स है वो अपने लिसनर के साथ कॉन्टेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं अ सिंगल क्लास कैन implement a single class can implement multiple listener interfaces. यानी कि एक क्लास सिंगल है जो मल्टीपल इंटरफेसेस कर रही है. अगर हम बात करें सिंगल लिसनर ऑब्जेक्ट कैन रजिस्टर विद
मल्टीपल इवेंट सोर्सेस। अगर हम बात करें मल्टीपल लिसनर ऑब्जेक्ट कैन रजिस्टर विद अ सिंगल इवेंट सोर्स, इधर हम बोल सकते हैं मल्टीकास्टिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट। सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इवेंट, तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इवेंट। इवेंट्स में क्या होगा, एन इवेंट इज द एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन दैट इज बाइंड द डेटा ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट of frame sorry, encapsulation of some user input delivered to the application asynchronously। ओके, सो यहाँ पर फिजिकल एक्शंस होंगे आपके, माउस बटन डाउन, की प्रेस एंड रिलीज, और लॉजिकल इवेंट्स जो होंगे आपके होंगे बटन प्रेस एंड गोट फोकस इवेंट। तो यहाँ पर आपकी जो हेडर फाइल होगी import java.awt, awt इवेंट इज द रूट क्लास ऑफ awt। अगर हम बात करें awt इवेंट्स इज अ root class of all AWT event events, यानी कि इसके बिना विदाउट AWT event we cannot access AWT event। अगर हम बात करें AWT, okay, so now AWT, so AWT events, event is a subclass, AWT event is a subclass age। तो पहला जो होगा एक्शन इवेंट होगा, दूसरा आपका विंडो इवेंट होगा, ओके, एंड थर्ड वन आपका होगा आइटम इवेंट, नाउ की इवेंट, देन माउस इवेंट, and then text event। So these are the event of very important। So now we talk about event listener interfaces, event listener interfaces। तो event listener interface में क्या होता है कि we have a number of built-in, that means Java we have a number of built-in interfaces as listeners for different listeners for a different type of event handling, टाइप्स ऑफ इवेंट हैंडलिंग्स। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, सो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, 2 कॉलम्स बना लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सब फर्स्ट कॉलम तो है मेरा इंटरफेस, और सेकंड कॉलम यहाँ बना लेता हूं मैं इवेंट्स जनरेटेड बाय। ओके, तो फर्स्ट जो मेरा इंटरफेस होगा सबसे एक्शन LISTENER, एक्शन लिस्टनर की अगर हम बात करें, सो एक्शन लिस्टनर में मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके बटन्स, लिस्ट, मेन्यू आइटम एंड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, FIELD टेक्स्ट फील्ड। दूसरा ADJUST एडजस्टमेंट LISTNER,
इसमें अगर हम बात करें आपके, तो इसमें आ जाएगा आपका स्क्रॉल बार, फिर आता है आपका आइटम LISTENER। अगर आपके हम आइटम लिस्टर की बात करें तो आपका चेक बॉक्स, मेन्यू आइटम एंड चॉइस एंड लिस्ट। अगर हम बात करें आपकी टेक्स्ट लिस्नर की, तो टेक्स्ट लिस्नर में जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा टेक्स्ट कंपोनेंट। फिर उसके बाद आपके पास आता है कंपोनेंट लिस्नर। तो कंपोनेंट लिस्नर में आपके पास कंपोनेंट होगा। फिर आ जाता है आपके कंटेनर लिस्नर, इसमें आपके पास कंटेनर होगा, ठीक है। और ओके, एक मिनट। तो इसी तरह आपके पास बहुत सारे होंगे, और एक बीच बीच में की लिस्नर होगा, फोकस लिस्नर होगा, माउस लिस्नर होगा, माउस मोशन लिस्नर होगा, और अगर एक और जो देखें विंडो लिस्नर होगा। तो विंडो लिस्नर में क्या आपके पास होगा मैं बताता हूं, यहाँ पे विंडो, ठीक है। ये आपके पास सारे लिस्नर होंगे। अब इन लिस्नर में अगर हम बात करें तो हैंडलिंग विंडो इवेंट, हम यहाँ क्या करेंगे, हैंडलिंग विंडोज इवेंट। तो विंडो के इवेंट कैसे हैंडल करेंगे, सो इट विल बी विंडो लिस्नर इंटरफेस has has 7 methods, यानी कि विंडो लिस्टर इवेंट के 7 मेथड आपको मिलेंगे। अब 7 मेथड कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका विंडो कैसे लगाना है पहले बता देता हूं, ठीक है। पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग विंडो इवेंट और ई। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट और पेस्ट और ये पेस्ट और ये पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले विंडो क्लोजिंग हो गया। अब क्लोजिंग के बाद दूसरा मेरा आएगा विंडो क्लोज्ड, तो विंडो इवेंट। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका विंडो ओपन्ड, ओके। एंड उसके बाद ओपन के बाद आएगा आइकॉनिफाइड, ICONIFIED, आइकॉनिफाइड। नेक्स्ट वन जो आपका आएगा इसमें वो आएगा आपका DICONIFIED, ओके। अब इसके बाद आपके पास आएगा DICONIFIED एक्टिवेटेड। और लास्ट की अगर हम बात करें, हम खुद ही पेश कर देते हैं इसको, ओके। यहां पर आएगा आपका डीएक्टिवेटेड। So these are the 7 methods we can implement on behalf of window listener. So now I just showing you how to perform practically, how can we write. So I am just writing example of Windows listener events, okay. So सबसे पहले import java.awt.star hash, import java.awt
awt.event event. Okay, now dot and star, that's okay. So both file we have to open, and now public class my frames ext extends frame implements विंडो लिस्टनर, यानी कि पहली मेरी क्लास बन गई। अब मैं एक फ्रेम बनाऊंगा जो मैंने बनाया था, माई फ्रेम। ओके, एंड नाउ ओपन। सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग सुपर माई फ्रेम। ओके, देन सेट साइज 300, 200 and now set visibility true करेंगे, अगर false कर देंगे तो it won't show, and add window listener listener. So this keyword we are using. Okay, so fold line we are adding, and now close our my frame. So now a public void window so closing closing and window event we are putting over here. So this event we have to put it over here and write down our code. So what we write, system.out.println. Okay, so now we are writing window is closing. तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि विंडो क्लोज। सो विंडो को क्या कर देंगे, डिस्पोज। डिस्पोज मतलब डिस्ट्रॉय या बंद, डिस्पोज कर देंगे। नाउ सिस्टम डॉट एग्जिट 0 मतलब ऑफ। नाउ ब्लॉक क्लोज। Now second function we are starting over here. So I just copy over here this function. Okay, copy and now paste it over here. विंडो क्लोजिंग के बाद जो मेरा नेक्स्ट मेथड होगा वो होता विंडो क्लोज्ड। ओके, और जैसे ही विंडो क्लोज होगी तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, क्लोज। विंडो क्या हो गई मेरी, क्लोज हो गई, और ये ब्लॉक क्लोज, और ये होम कंट्रोल सी। अब इसके बाद एक और, या विंडो क्लोज के बाद क्या था मेरा नेक्स्ट ऑप्शन, आपके पता ही है, आइकॉन ओपन्ड। सो विल टॉक अबाउट OPENED NED. So now window is OPENED opened. फिर हम एक और बार इसको पेस्ट करेंगे, और इसके बाद थी हमारी आइकोनिफाइड। एक्शन क्या था हमारा, आइकोनिफाइड। सो आइकोनिफाइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, विंडो इज आइकोनिफाइड। ओके, सो होम नाउ क्लोज। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डी आइकोनिफाइड। सो नाउ वी आर राइटिंग डी आइकोनिफाइड। okay, now D. So we are writing D आइकोनिफाइड, और यहाँ पर लिख देंगे हम डी आइकोनिफाइड, और उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेटेड। सो ACTIVATED एक्टिवेटेड, एंड हम यहाँ पे लिख देंगे विंडो इज एक्टिवेटेड। ओके, सो उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे वापस, और डीएक्टिवेटेड बच रहा है, उसके बारे में लिखना है। ओके, सो नाउ वी आर राइटिंग
window is deactivated, and now deactivated, यानी कि मेरे सातों लिक्शन यहाँ पर काम आ गए. अब मुझे क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक void main and string args, okay, and my frame mf is equals to new my frame, and then terminate and 2 times. So I have to save this file, my frame dot java, and now open cmd and cd doc cd java and java c my frame dot java. So now let me check the, it is now 42 errors. So just let me see whatever I'm writing mistakes. First, okay, sorry, I put it many times python terminator, then let me see that अब error पता लगी. So now 25 error we are having. Okay, line number 50, 47, 42, 7, 25, 12. Okay, import, that is the import, import. Okay, and now let's see the error 24 void. Okay, okay, public class. Oh shit, मैं कितनी बार क्लास रॉन्ग लिखता हूँ यार. CLASS class. Okay, now one error, my frame invalid method declaration trend type requirement. So line number is that 6 my frame. So okay, this is my frame. Okay, so we are writing my frame. Okay, now my frame again error. So my frame is giving a error. Suppose my frame, suppose we are declaring my frame. Okay, frame okay, ame. Now see that. Okay, now that is the real error. Public class my frame x, public class my frame extends frame implements window listeners. Okay, so doesn't override abstract. My frame is not abstract and doesn't override abstract means method window de-iconified window event. Okay, so we'll talk about window de-iconified. Okay, so let me check window d, okay, DEDICONI iconi FIET. So let me just create a comment. Okay, and let's see that error. Okay, now public static void main, that is the error of strings args. So public 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 st static void main string string argument. Oh shit, yeah, that is now bullshit. Now error is public class extend implements window de-iconified window event action raise हो रहा है. तो दिस इज द एक्शन लिस्टर इम्प्लीमेंट विंडो. तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक्शन इवेंट रेज हो रहा है. ओके, सही कोड में आपको पता लग जाएगा. तो यहाँ पर इस आइकन की कोई वो नहीं है. दीज आर द एक्शन इवेंट अकर व्हेन वी आर डूइंग समथिंग. So
this is the window class, and public class my frame extend, and frame implement window listener, and these are the de-iconified, it will generated. So I am just writing, you can see this my frame super keyword, my frame is that. Okay, and now set size and set visible and end window listener of this keyword. So this is the code we are writing over here. This is the window event. Okay, so now we'll talk about a new event like that in this code. So using a listener adapter class, using a listener adapter क्लास, तो लिस्नर एडिटर क्लास में क्या करना है हमें कि विंडो लिस्नर एडिटर्स यानी टू मेक अ थिंग्स क्या करना है, टू मेक अ थिंग्स अ लिटिल मोर कन्वेनियंट अ कंसेप्ट कॉल्ड adapter classes can be used. Okay, so AWT इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पर मिलेंगे कंपाउंड अडेप्टर्स, कंपाउंड अडेप्टर हो गया आपका। ओके, तो पहला आपका कंपाउंड अडेप्टर हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका माउस मोशन, ये एक साथ आएंगे, मैं थोड़ा अलग लिखा हूं तो आप ये ध्यान रखिएगा, कॉलम में आएंगे। कंटेनर अडेप्टर एंड फोकस ADAPT अडेप्टर एंड की ADAPTER adapter. These are the adapter we are using, और बिल्कुल इनको भी वैसे ही पब्लिक क्लास के साथ आपको एक्सेस करना है, उसी तरह यूज करना है। और कैसे, पब्लिक क्लास माई फ्रेंड एक्सटेंड विंडो अडेप्टर, सो अडेप्टर वी कैन यूज एंड देन आफ्टर डॉट, अगर मैं बात करूँ इस कोड की, तो इस कोड में ही इसको यूज कर लेते हैं। कैसे, सपोज हमने एक क्लास बनाई है मेरी माई पब्लिक क्लास माई फ्रेम ओके एक्सटेंड विंडो, तो अब इस चीज को मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ पब्लिक क्लास माई फ्रेम ओके एक्सटेंड्स विंडो ADAPTER अडेप्टर बना दिया। अब मैंने क्या करना है अडेप्टर के पहले, यानी कि ये अडेप्टर बना दिया, इसके बाद यहाँ पे एक FRAME फ्रेम F ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद माई फ्रेम बनाना है F। अब मुझे जो है ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सुपर कीवर्ड को जो आपने यहाँ पे लिया है इसको, ओके इसको कमेंट बना देते हैं और इस कोड को हम यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है। अब कमेंट बनाने के बाद हम करेंगे F इक्वल्स टू न्यू FRAME फ्रेम माई FRAME, तो ये F डॉट सेट साइज, और यानी कि जो चीज हमने उसमें लिखी 200 हम इस तरह से लिखेंगे। अब F डॉट सेट visible true, and now F dot add window listener listener of this keyword, यानी लिखा वही है बट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लिखा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लिखा, अब यहां पर वही फंक्शन आ गया आप इस सिस्टम डॉट एग्जिस्ट, तो डिस्पोज को मैं कमेंट बना देता हूं और सिस्टम को भी यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ, और ये सिस्टम डॉट एग्जिट से यहाँ पे काम चला जाएगा। और लास्ट में जो मेरा है ये यहाँ पर मैं इसको कमेंट बना दूंगा, और यहाँ पर जो माई फ्रेम है
m इक्वल्स टू न्यू माई frame फ्रेम ऑब्जेक्ट कॉल करा के इसको बंद कर दूंगा। ओके सॉरी कंट्रोल x। ओके इसको पूरे को मैं कमेंट बनाऊंगा। सिर्फ मैं एक इवेंट अभी डालता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग वाला, और क्लोजिंग के अलावा सब मैं हटा देता हूँ। ओके यस दैट वन। ओके नाउ यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई फ्रेम m। ओके m इक्वल्स टू न्यू माई फ्रेम। ओके नाउ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो रन हो गया। नाउ जावा माई फ्रेम हैव यू सीन दैट एक फ्रेम मेरा यहाँ पर आ गया है, किस तरह का फ्रेम यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है और किस तरह से चीजें चल रही हैं। ओके चाहूँ तो मैं इसे एप्लेट पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने जावा से ही इसको ओपन करवा लिया। ठीक है, तो दिस इज द applet frames we are using over here, and tomorrow next class में हम पढ़ेंगे JFC and Java Swing components. So till now, thank you, have a nice day, bye bye, see you, share and subscribe my channel.